Assalamu alaikum viewers. Today we are going to learn and talk about tenses, and I hope that you will clear all the ambiguities and all the confusions about your tenses in this video. So let's start with the video. सो गाइस व्हाट आर टेंसेस। टेंस को हम उर्दू में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं ज़माना, यानी किसी वक्त की बात, चाहे गुजरा हुआ है, चाहे आने वाला है, या चाहे मौजूदा है। तो टेंसेस को हम बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली तीन तरह का टाइम है हमारे पास। एक तो है प्रेजेंट, देन इज पास्ट, एंड देन फ्यूचर। एंड एवरी टेंस, प्रेजेंट को हम उर्दू में कहेंगे हाल, माजी और मुस्तकबिल। अब हर एक टेंस को चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उसकी हालतों को नज़र में रखते हुए, और वो चार कैटेगरीज क्या हैं उनके बारे में भी अभी हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव नोन अबाउट दैट। वो चार क्या हैं? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, perfect, and then perfect continuous। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ये तमाम की तमाम कैटेगरीज मौजूद हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट। इसी तरीके से अगर हम पास्ट को देखें तो पास्ट में भी आता है पास्ट इंडेफिनेट, past continuous, past perfect or past perfect continuous. Similarly, we have the same categories for future. Future में भी हमारे पास future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So today, first of all, we are going to learn about present indefinite tense. Present indefinite. So guys, what is the word indefinite means? Indefinite means improper or not very clear, not clear. That is not definite, obviously. That is not clear. That is very improper. That is not proper yet. So प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें हम किसी इनडेफिनिट बात की बात करते हैं, जिसमें हम कोई ऐसा जिक्र करते हैं कि जो बात अभी कंप्लीट नहीं हुई या हमें नहीं पता कि वो कब कंप्लीट होगी या कंप्लीट होती भी है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें मोस्टली हमारे पास नेचुरल फिनोमिनास की बात हो रही होती है। लाइक वो चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में रूटीन में हो रही हैं, but we cannot say them that they are done or they are over, and we cannot say that they are going to come in the next time or not. So in the same way, we will come to know that what does present indefinite mean. प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको बता दिया कि एक बहुत इम्प्रॉपर सी चीज़ को कहते हैं, कोई ऐसी बात जो बिल्कुल इम्प्रॉपर सी हो,
उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं, और प्रेजेंट का मतलब है कि वो मौजूदा ज़माने में है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो बातों का जिक्र होगा जिनको कि हम इम्प्रॉपरली ले रहे हैं और जो इस प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, वो खाना खाती है, वो खाना खाती है। सो वो खाना खाती है में अब हम क्या कहेंगे कि हमें नहीं मालूम किस टाइम खाती है, सुबह या शाम। हम वी आर नॉट बाउंड और वी आर नॉट क्लियर अबाउट द आइडिया, बट हमें सिर्फ इतनी सी बात पता है कि वो खाती है, राइट। सो हमने एक इनडेफिनेट सी बात कर दी कि वो खाना खाती है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि इस जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसकी उर्दू में अगर हमने पहचान करनी हो तो इसके आखिर में आएगा ता है, ती है और ते है। जैसे वो खाना खाती है, वो खाना खाता है, वो खाना खाते हैं, तो ये सारी की सारी बातें जब उर्दू में आएंगी तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम बनाते कैसे हैं, इसमें हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। फॉर्मेशन फॉर्मेशन में अब हम लेते हैं, सबसे पहले तो आपको पता हो कि हर एक टेंस में तीन तरह की चीजें हैं, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तीन चीजें जरूर मौजूद होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को देखते हुए हम वर्ब को लेते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है दैट कम्स ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सो हियर वो खाना खाती है, शी ईट्स meal. So you can see guys, we have the word is basically the verb is eat, right? But we have added s in it. अब इस s का क्या मकसद है? ये s बताता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी वर यूजिंग s विद इट, राइट। एक दफा दोबारा से याद कर लें, अगर s आएगा वर्ब के साथ तो इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड it is making the complete sense then that she eats meal. So eats will show us that it is the tense is about present indefinite tense. I hope you would have understood at this point. Now come up with another point. इसकी formation में we have a concept that is called subject, verb, disagreement. Subject verb disagreement. Subject verb disagreement means if the subject is plural, the verb will be singular. And if the subject is singular, the verb will be plural, right? I hope you would have understood at this point. इसका मतलब क्या है, मैं आपको आम जबान में समझा देती हूँ। मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो वर्ब ऑब्वियसली सिंगुलर होगा। डिसएग्रीमेंट है, दे डू नॉट एग्री विद वन अनदर। Subject and verb do not agree with one another, they have a disagreement. Like if it is plural, the verb will be singular, and if the subject is singular, the verb becomes plural. Like here we saw that subject is she
and verb was eat. So we automatically added s with it because subject is singular. So we have added s. And if the subject is plural like they, so we will not use s with it. We will simply write eat. They eat meal. She eats meal. I hope you would have got it till this point, right? Let me repeat it again. In present indefinite tense, we have subject-verb disagreement. It means that if the subject is singular, the verb will be plural. And if the subject is plural, the verb will be singular. Otherwise, for the rules of the formation, we will have subject, then verb, and then object. And for verb, we will always use first form of the verb. Understand? First subject plus first form of the verb and then object. Now coming towards some of the examples. And as I told you earlier, that in the present indefinite tense we talk about the natural phenomena, जिसमें कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सूरज मशरिक से निकलता है फूल बहार में खिलते हैं. So these are the some of the examples of present indefinite tense कि सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, फूल बहार में खिलते हैं, बारिशें बरसात में होती हैं. So these are all the natural phenomena. That is the basic example of present indefinite tense, right? So now come to the other tense, that is present continuous tense. Now the word continuous shows us that it is still happening. It is jari. ये जारी है, ये चल रहा है. It is not finished yet. Okay? It is going on and on and on. It is going on. It is still happening. Right? So, present continuous means the things we are talking about in this sentence are still going on. They are still happening. Alright. So, the first thing in it, while talking about the formation, we will write it as for the formation, we will come to know that it has subject plus verb and it will add ing as well plus object. Subject plus verb plus object. So, she is driving the car. She is driving the car. So, is, we have three helping verbs in it. Is, are, am. So, the formation would be like
helping verb plus verb with ing plus object. So the helping verbs here in this tense are is, are, am. We will be using is, are and am, three helping verbs for this tense. Alright. Now we will come to know that which helping verb is being used with which of the subjects. Subjects, and here we will write the helping verbs. If the subject is he, she, it, or any singular noun, then we will use is. And if the subject is I, we will use am. If the subject is we, they, or you, we will use are. So students, once again, memorize it by in your mind that for the subjects we have different helping verbs in present continuous tense. For he, she, it, and the singular noun we have is. For I we have am, and for we, you, they, and any plural noun we have are. So for example, boys are swimming. Boys are swimming in the pool. Okay, I am baking a cake and now you can see boys are more than one. It is a plural noun, so we have used are over here. I'm talking about myself, so I will use am. And if I am talking about someone else, Ali is writing his diary. So these are the different sentences with different subjects, and so we have come to know that the verbs are also, the helping verbs are also different. For boys we are using are. I am, Ali is, singular noun is with I am, and for plural noun we have are. I hope you would have got it till this point. Now come to the next point. Okay, while talking about the negative of it, negative, then we will use subject plus helping verb plus not plus verb with ing plus object. Like from the previous examples, we will come to know we will come to know that boys
are not. Are is the helping verb, not is not verb. Boys are not swimming in the pool, right? So similarly we can say Ali is not writing his diary, and we would say I am not baking the cake. So these are all the examples of negative sentences. Negative sentences of what? Present continuous tense. For making the negative of the present continuous tense, we will just add not after the helping verb, help subject, then helping verb, then not, then we will have verb plus ing, and then we will have object. Okay. Let's talk about the interrogative now. Like when we are going to ask question for someone. Questioning sentence. For questioning sentence, we will just bring the helping verb from in the start. Are the boys swimming in the pool? And do not forget to put a full stop at the end of the sentence. A question mark. Do not forget to put the question mark at the end of the sentence. So the formation would be like helping verb plus subject plus verb with ing and then the object. So it will complete, and then a question mark as well. So it will complete the whole interrogative sentence of present continuous tense. So the formation or the rules would be, we will add helping verb, subject, verb with ing, object, and then question mark. Okay, so coming to words. Present perfect tense. As the name shows that it is perfect. It has been done. It is over. But it is done in the present. हो चुका है काम, but हुआ कब है? प्रेजेंट में हुआ है. सिमिलरली इसकी जो उर्दू फॉर्मेशन है उसको हम अगर देखें तो उसके एंड में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं. राइट? ओके. सो इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, it has a different type of helping verb, that is has और have. अब इसमें जी दो नए तरह के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. उनमें से एक है हैज और दूसरा है हैव. अब हैज क्या करता है और हैव क्या करता है? हैज हमने हमेशा लगाना है सिंगुलर, सब्जेक्ट्स के साथ, और हैव हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो देन वी विल यूज हैज, एंड जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन वी विल यूज हैव. ओके, नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ इट. Similarly, we will add subject plus helping verb plus verb, and now
The point to be noted is the verb will have third form of it. Alright, you all know that there are three basic forms of the verb: eat, ate, eaten. So, eaten is the third form, right? So, we will add third form of the verb in this sentence, and then we will add the object. From the same example, boys are swimming in the pool. So we will say boys have swam, swim. Boys have swim, swam, swim in the pool, right? So they have done it. Or I would say the other example, I have baked the cake. So you would have seen that I have used have over here. Baked, bake, baked, baked. The third form of the verb, and then the object, right? So this is the basic formation of present perfect tense. And for making the negative of it, we will say subject plus helping verb, then not, then the verb with third form, and then object. Subject plus helping verb plus not, then third form of the verb, and then object. So here we have the example would be like, I have not baked the cake, right? So again I would like to tell you that there are the two helping verbs for this tense, has and have. For has we will be using singular subjects, and for have we will be using plural subject. So what comes in the singular subject? In singular subject we have he, she, it, or any singular noun, right? Or on the other side, in the plural subjects we have I, we, they, you, or any plural noun like boys, girls, like Ali and Asad, and so many else, right? So we have subject, then we have helping verb plus not, then verb, third form, and then object. So this is the basic formation of the present perfect tense. Now coming towards the negative of it. Okay, we have talked about the negative. Now coming towards the interrogative of it. Interrogative means interrogating someone or asking the questions. So the interrogative would be, similarly we will put the helping verb in the at the front of the sentence, helping verb plus subject plus verb and then object and then question mark. It would be, am I baking a cake? Am I baking a cake? So I'm asking about something in the present. No, it's wrong.
ये कट कर दीजिएगा। हैव आई बेक्ड द cake? So, and then we will add question mark in it. So this is the example of a plural subject. Have I baked the cake? Understand? Okay. Now come towards the other fourth type of the present tense, that is present perfect continuous tense. Coming towards the fourth type of present tense, that is present perfect continuous tense. So for the present perfect continuous we would have the formation, इसकी उर्दू में अगर हम बात करें तो ये होगा, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमारे पास है कर रहा है, बट कुछ टाइम से कर रहा है, वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। या अगर हम उसी एग्जाम्पल को लें तो मैं कल से केक बना रही हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास टाइम के लिए से का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की चीजें थी वो सेम है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही आएगा, बट वक्त की इसमें आएगी, कैद आएगी, यानी कब से कोई काम कर रहा है। तो यार एक तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी ये काम हो चुका है, और बट अभी भी कंटिन्यूड है, यानी अभी भी हो रहा है, राइट? सम ऑफ द पार्ट इज डन बट स्टिल इट इज हैपनिंग। सो इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हमारे पास दो अलग सी चीजें आती हैं और वो आता है सिंस, वो हमारे पास आता है सिंस, और ऑलराइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इस टेंस में हमारे पास वक्त की जो है वो कैद मौजूद है, यानी इसमें हमें टाइम बताया जाता है कि कौन सा काम हम किस टाइम से कर रहे हैं। सो उर्दू में अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो हम कहते हैं कि वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहा है, या मैं 2 दिन से या मैं कल से केक बना रही हूँ। सो इसमें जो वर्ड से आया है वो हमें बताता है कि ये कुछ टाइम की बात है। ओके, इसके लिए अब हमारे पास दो नए वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो हम इसमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए यूज करते हैं। उनमें से एक है सिंस और फॉर। दो ये वर्ड्स हैं, या तो हम सिंस लगाते हैं या हम फॉर लगाते हैं। अब सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, तो स्टूडेंट्स ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ी सी इसमें आपने अपने माइंड को ओपनली इसको सुनना है। सिंस वहां लगता है जहां पे प्रॉपर टाइम बताया जाए, सिंस 2 o'clock, सिंस वेंसडे,
or since last week. बट अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर के लिए हमारे पास आता है फॉर 3 weeks, for you can say 2 hours, or for many years. So ये जो है जहाँ पे हमारे पास सिंस और फॉर लगेगा तो हम इस तरीके से सिंस और फॉर लगाएंगे, जहाँ पे कंप्लीटली हमें टाइम का आइडिया होगा वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, बट यहाँ पे जहाँ पे रफ आइडिया है, हमें कंप्लीट उसका आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे. सो अब हम इसकी इंग्लिश में फॉर्मेशन देख लेते हैं. Similarly, because it is the perfect tense, so we will be using third form of the verb. अब इसकी फॉर्मेशन पे अगर हम आए, so the formation is will be subject plus been plus verb, and since it is continuous, so we will add ing plus since or for and then object. So the helping verbs for perfect are has or have. I have been baking the cake for 2 hours, or since 5 o'clock, right? For I have used a rough idea of the time, and for since I have used the perfect time or the accurate time. So here the formation of the present perfect continuous tense will be subject plus helping verb plus then been, then verb plus ing, then object, and then since or for. Understand? Alright. So the other example can be, for the other example it would be Ali has been writing his diary for many years. अली बहुत सालों से अपनी डायरी लिख रहा है. So the English, so the while translating it into English is, Ali has been writing his diary for many years. Alright, now come to the negative of it. Negative इसका क्या होगा? I have not been baking a cake since 5 o'clock. Right? मैं 5 बजे से केक बेक नहीं कर रही हूँ. So I have not been. Similarly, for the formation of it, we will come to know subject, then helping verb, then not,
then we will have been, then we will have verb with ing, then the object, then since or for plus time, right? So it will complete our sentence of the present perfect continuous tense. Okay. And while talking about the interrogative of it, I will say have I been baking a cake since 5 o'clock? And then obviously the question mark. क्या मैं 5 बजे से केक बेक कर रही हूँ? So this is the interrogative form of it. So while talking about the formation of it, we will come to know that helping verb, जैसे कि सब में हम helping verb शुरू में ले आते हैं interrogative बनाते हुए, then subject, then been, then verb with ing, then the object, and then the since or for, and then time. And do not forget to put the question mark at the end. So ये वो formation है जिसको follow करते हुए we will come to know that how would we set the sentence in the present perfect continuous tense, right? All right. Now I hope you would have understood about the all the present tenses: present indefinite, present continuous, present perfect, and then present perfect continuous. All right.